So in this video, we are going to talk about quantum chemistry. So especially particle in a box system. So on the previous video, we have seen our wave function and the second region of the particle in a one-dimensional box, that was psi2 equals to b of sine 2 pi by h square root of 2 me का square root of 2 me into x. Now if we consider the boundary conditions at x equals to L, then what will happen? So at x equals to L, psi 2 equals to psi 3 equals to 0. So if psi 2 equals to 0, then the right hand side will also be 0. Now b cannot be 0, because if b is 0, then what will happen? Psi 2 will also be 0. At any point on this region, right? If the coefficient is 0, then psi 2 will be 0 at any point in this region. Even the wave function will collapse. That means हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये जो सेकंड रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. वेव फंक्शंस का मतलब यही होता है. बट हम जानते हैं सेकंड जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. Therefore b 0 नहीं हो सकता. So now we have the only option, that is sine function is 0. Now you know very well sine function 0 का मतलब क्या होता है. If sin x equals to 0, then हम बोल सकते हैं x would be plus minus n pi, क्योंकि sin plus minus n pi क्या होता है, 0 होता है, राइट. तो ये जो sin के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम रिलेट कर सकते हैं प्लस माइनस n pi के साथ. So 2 pi by h into square root of 2me into L, that would be plus minus n pi. Now what we want to do to find out the wave function. By this equation, the last equation I have termed as 1. So इस इक्वेशंस के माध्यम से हम लोग कुछ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. मेन इक्वेशन हमारा यही है, मेन इक्वेशन ये है, हम लोगों को इसको ही निकालना होगा. साई 2 निकालने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, 2 pi by h into square root of 2me would be plus minus n pi by L. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इस इक्वेशंस को, we can rearrange like this. अब हम क्या करेंगे, ये जो मेन इक्वेशन है ना, मेन इक्वेशन पे 2 pi by h square root of 2me के जगह पे पुट कर देंगे plus minus n pi by L. Then we will have psi 2 equals to b sin plus minus n pi by L into this x term. इसमें ये x term present है. Okay? Now a very interesting point is here to note that ये जो प्लस साइन है और जो माइनस साइन है, हम इसको एक बार लिख सकते हैं एज प्लस एंड अनदर वन एज माइनस. क्या दोनों डिफरेंट वेव फंक्शंस को डिनोट करते हैं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज if we consider the plus sign, then we have psi 2 would be b sin n pi x by L. If we consider the negative sign, we will have psi 2 equals to b, sorry, okay, anyway, so we can write b sin minus of n pi x by L, and we can go further, minus of b sin n pi x by L. We know that sine of minus x is nothing but minus sine x, so we can do that, we can do it easily. Now just look at that, all the functions are same, but here is a negative sign. So these two wave functions are not different, rather the second, I mean the minus term, I mean the psi 2, when it is minus, that is just a multiplication with minus 1 to that of this wave function. सेकेंड वाला जो wave function है वो कुछ भी नहीं है, वो पहले वाला ही है,
इसमें क्या है, एक -1 मल्टीप्लाइड हुआ है, राइट। So they are not different quantum state or different wave functions. So we can easily use plus sign as well as minus sign. But normally plus sign is used for simplicity. Okay, but it doesn't, I mean, they do not represent different quantum state or different wave functions at all. Okay, so we have these wave functions, that is psi 2 equals to b sine n pi x by l. Okay, so where n equals to 1, 2, 3, etc. Now, our aim is to find out the value of, I mean, to determine the expressions of psi 2. But what is b here? B is a constant, we know very well. But what it is exactly, the value of it in terms of box length or something else which we know. So we need to find out the value of b. To do that, we use a process that is called the normalization requirements. Now let's talk about what is normalization. इसको जानने के लिए हम लोगों को जाना होगा 1D बॉक्स का डायग्राम के ऊपर। इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम जानते हैं फर्स्ट जो रीजन है उसमें साई 0 होता है, एज वेल एज फॉर द रीजन 3 साई इज आल्सो 0, बट फॉर रीजन 2 साई हैज अ फाइनाइट वैल्यू, एंड वी कैन इजीली से दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, ये जो सेकंड रीजन है ना, ये सेकंड रीजन में डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। हम कंप्लीटली बोल सकते हैं पार्टिकल तो होगा, बट सेकंड मतलब पार्टिकल ये सेकंड रीजन पे एग्जैक्टली कहां पे होगा वो हम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। पार्टिकल यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, वी डोंट नो। बट पार्टिकल ये जो कंप्लीट सेकंड रीजन है ना, इसमें तो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं बॉक्स के अंदर तो पार्टिकल है ही है। कंप्लीट बॉक्स के अंदर हम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं पार्टिकल इसमें तो होगा ही होगा। मतलब the probability of finding the particle or finding the electron inside this box must be 1, right? मतलब probability पाने मतलब इसमें क्या होगा, probability maximum होगा in the second region and the maximum probability value is 1. So how can we represent it with mathematical term? Let's say it is x equals to 0, it is x equals to l. So x equals to 0 और x equals to n l के in between जो region है वो क्या होगा, होगा लिमिट होगा 0 to l. स्पेशली इसमें इट इज अ वन डायमेंशनल बॉक्स, सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट लाइक दिस। एक्चुअली वी शुड स्पेसिफाई द वन डायमेंशंस, ठीक है, वी शुड स्पेसिफाई द वन डायमेंशंस because this axis is energy axis, okay, potential energy, and this is coordinate. Particle x equals to 0 और x equals to l के बीच में होगा, हम जानते हैं, and we can certainty के साथ बोल, we can tell it with certainty, okay. बट ये x के ऊपर एग्जैक्टली एक पॉइंट ले लो, इसमें इसमें कहां पे होगा वी डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली पार्टिकल कहां पे लोकेट होगा ऑन द एक्स एक्सिस वी डोंट नो, बट 0 और l के बीच में जो रीजन आ रहा है उसमें तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, दैट इज 0 and l, and we know we are talking about probability. So what is probability in terms of psi? That is nothing but modulus of psi as a function of x square of dx, and that is equals to 1, because we are considering maximum probability in the region which is made between 0 and l, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया probability, and this is called normalization। मतलब वो वेव फंक्शंस क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड हो गया। नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है, इन अ सर्टेन रीजन इसमें इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होगा, हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो हाउ टू डू नॉर्मलाइजेशन,
So it is our given wave functions. Psi is a function of x and t, because we know psi is not a function of coordinate only, it is also a function of time. So if we consider a 3D space, right? Sorry, it is one dimension. If we consider the region between minus infinite to plus infinite, okay, then minus infinite to plus infinite psi of xt square of dx, this is modulus, okay, equals to क्या होगा, सेम लिमिट पे होगा. हम जानते हैं ये जो साई ऑफ एक्स टी होगा ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई ऑफ एक्स के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे पास टाइम फंक्शंस होते हैं, अगर हम लोग उसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, इफ इट इज आवर टाइम डिपेंडेंट पार्ट, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, ये होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट a into e to the power plus I e t by h cross. Now if you multiply, I mean if you get the multiplication of, that means the psi star psi, you will get just this a square term, because the exponential will collapse to each other. क्या होगा इसमें, हम लोग बस जो कोऑर्डिनेट फंक्शन है उसको ले सकते हैं, हम लोग टाइम का जो फंक्शन है उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. Actually, the function was something exponential just. Okay. Anyway, so it is our psi, which is a function of coordinate, and that is modulus of sine function of x square dx. That is equals to 1. And this is the condition of normalization. Now इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, प्लीज नोटिस, इसमें होगा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू जीरो. Why this is so? I am writing the 1D box here. It is our x equals to minus infinite, it is our x equals to 0, it is L, it is plus infinite. Okay. Now I am breaking, okay, I am breaking our limits. Initially this one, then this one, then this one. So it is our x equals to minus infinite to 0. Then the same wave functions I have written here. Now the middle one, that is the limit between 0 to L. So this is 0 to L, I mean the integration limits, and the same wave functions as well. And the third one is L to infinite. Okay, so this is our limit, that is L to infinite, and the same wave functions here also, I mean the probability term, and that would be 1, right? So मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये जो वेव फंक्शंस वाला टर्म है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी टर्म है, ये जो इंटीग्रेशन टर्म है, मैं इसको बस डिवाइड किया दो टर्म में, तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया. और हम बहुत अच्छे से जानते हैं माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, तो ये क्या होगा, वेव फंक्शन इज जीरो, सो साइड स्क्वायर विल आल्सो बी जीरो. ओके, इन द थर्ड रीजन आल्सो psi doesn't exist, I mean psi equals to 0. Therefore, this term is also 0. So we are left with this term only, that is under integration limit 0 to L psi to function of x square dx, and that is equals to this one. Okay. यहाँ पे हम लोगों को फाइनली ये वेव फंक्शंस मिल, I mean दिस टर्म मिल गया, और इसको हम लोगों को अभी इंटीग्रेट करना होगा. So how to integrate this one? Let's do it. Okay. So we know very well that psi 2 is nothing but b sine n pi x by L. So I am getting the value of this, I am inputting the value of psi 2 here. So it is b is constant, right?
So, okay, I don't need to go for step jump. It is b sine n pi x by L. But this is square term. It will be b square, this will be sine square. And it is dx equals to 1. Now b square is just a constant. So we can make this b square term outside this integration. So what we can do here is that we can write the b square term with a different color and outside this integration. Now we need to integrate this one. So what we can do, we know that b square by 2, it is 2 sine square n pi x by L dx equals to 1. हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। इसमें क्या हो जाएगा, सिमिलर केस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2n पाई x by L into dx equals to 1. Don't be confused these two. These two is power of this sine function, and this is not the power. This is the angle part. Okay, this is multiplied with n pi x by L. Now we need to break down this integration, like b square by 2. We are not touching this b square by 2. Okay, so it is 1 into dx, that is just dx, minus of under integration cos 2n pi x by L dx, and that is equals to 1. So I am writing here b square by 2, we are not touching this b square by 2 term, that is constant. So now what is the integration of dx? Integration of dx is just x. Okay, so I need to mention the limit here, 0 to L, 0 to L, right, 0 to L, here also 0 to L, so it will be 0 to L. And we know the integration of cos functions like cos x, that is sin x, it will be sin 2n pi x by L divided by 2n pi by L, because sin n pi का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस n pi, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया, स्पेशली कॉस nx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका होता है sin nx by n. हम इसका जस्ट यही फॉर्मूला यूज किया इसमें, ठीक है, we just used this formula and nothing else. So I need to rough. Okay, anyway, so what is the next line here, that would be b square. Okay, so we are left with here. Okay, so this is our integration and the bracket will be closed here, and we have our limit, that is 0 to L, that is equals to this right hand side, that is 1. हम इसको क्या करेंगे, अभी ये जो b स्क्वायर बाई 2 टर्म है इसको ऐसे लिख लिया, अब क्या होगा, इसमें लिमिट इनपुट करेंगे, तो एक बार लिखेंगे L और एक बार लिखेंगे 0, that is L minus 0, and this would be just L by 2n pi. Okay, and this is sin of 2n pi x by L, एक बार लिखेंगे sin of 2n pi, अब क्या करेंगे, x की जगह पे लिखेंगे एक बार L माइनस ऑफ,
x की जगह पे लिखेंगे 0 and we know that 0 into something is 0, so this is sine 0, right, and this is equals to 1. Okay, so b square by 2, this is L minus of, now look at that, L is cancelled out, so sine of 2 n pi, that is 0, we know it very well, so this term will be 0. So the parenthesis term is 0 minus 0, that is 0, and 0 into L by 2n pi is also 0. So this term is nothing but overall 0. So we are left with b square by 2 into L. Okay, that is equals to 1. So what is b? B will be 2 by L उसका square root. ठीक है? So our wave function is psi 2 equals to root 2 by L sine n pi x by L. Right? So it is our desired wave function at region 2. Now, is there any restriction? Look at that. It is a very interesting point. B square by 2 equals to 1, I think. Yes, here it is L. So B square is 2 by L. So B would be plus minus 2 by L square root. Right? So it will have our plus and negative sign, plus and minus sign. तो b का वैल्यू क्या हमेशा प्लस होगा या फिर हमेशा माइनस होगा या फिर कुछ और होगा? सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन b. b could be plus 2l plus 2 by l or minus 2 by l. It may be real number as well as it may also be imaginary number. Okay, so only absolute value of b has been found. ये हमारे पास जो b का वैल्यू है उसका एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग लेते हैं. वो इमेजिनरी नंबर हो तो भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, वो माइनस में हो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उसका एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे, मॉड ऑफ दिस. ओके, कुछ भी हो बस हमको चाहिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू. फॉर एग्जांपल इफ b is 2 plus 3i, that is a complex number, so we will take only the absolute value, that means the modulus of b. We know it very well, that is 2 square plus 3 square under square root, that is equals to root of 13. Okay, we will take just the absolute value, nothing else. Generally, to get the absolute value of b, we will take square root of 2 by l. Okay, that is the plus value actually we have take. We normally take. So if there is no restriction on b, we can transform this b into this term. So better to say b is square root of 2 by l into exponential of I alpha, because b can also be imaginary, where alpha is the face of b. ये हमारे पास जो b है ना, इसका फेस होता है, फेस. ठीक है, तो ये अल्फा है उसका फेस. जो अल्फा होता है इसका रीजियन होता है 0 से शुरू होता, ये इट कैन बी 0, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 and it will end to pi. ओके, तो 0 से शुरू होगा, 2 pi से खत्म होगा. इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 2 pi भी हो सकता है. ओके, एक्चुअली फेज मीन्स सम एंगल and nothing else. So for simplicity we choose the phase is 0. So when alpha equals to 0, then e to the power 0 means 1. So this term is 1 when alpha
equals to 0. So for simplicity, we take b is equals to square root of 2 by l. What we have said here, we take the absolute value. If we change into this form and make the alpha equals to 0, then we'll get this simple term. Okay. So we have this wave function square root of 2 by l sin n pi x by l, where n is 1, 2, 3, etc. etc. N is called the quantum number. Okay. Now, okay. So in the next video, we will talk about the graphical representation of psi as well as psi square also. So why we need psi square? We also have psi. So why we are bothering with psi square? So in the next video, we will start with graphical representation of wave function in particle in one dimensional box. Till then, thank you so much.